हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रकाश है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो HPCL का रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो HPCL का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है 2026 में वेरियस पोस्टों के लिए वेरियस वैकेंसी निकला हुआ है। तो आज हम लोग जिस पे बात करें वो इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, जिसमें आपका 100 समथिंग वैकेंसी है, 100 समथिंग अप्रोक्स 110-20 समथिंग ऐसा कुछ है। तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसके ऊपर डिस्कस क्या करना है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिकल में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो रिक्रूटमेंट क्या है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड का क्वेश्चन है। कौन सा? 15/4/2025 का। ये ओरिजिनल HPCL का पेपर है 2025 का। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो टोटल टेक्निकल क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द ABCD पैरामीटर आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज its performance. Which of the following describe the relationship between the voltage at the sending end VS and the voltage at the receiving end VR for a transmission line? Then answer will be VS equal to AVR plus BLR. That's the correct answer. Second question क्या है? The total flux leaving a sphere of radius R due to a point charge Q at the center is given by. तो phi equal to Q by E0. In the third question, in the context of infinite bus bar, which parameter remain constant regardless of the connected alternator's output? Frequency is always will क्या बोल रहा है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फिनाइट बस बार द पैरामीटर रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट क्या रहता है इसमें? कॉन्स्टेंट जो रहता है वो फ्रीक्वेंसी। इन अ प्रैक्टिकल डुअल कन्वर्टर सर्कुलेटिंग सर्किट इज लिमिटेड बाई इंसर्टिंग एन बिटवीन टू कन्वर्टर्स। क्या होगा आंसर? इंडक्टर। What is the form factor of a sine wave in a full wave rectifier? तो आंसर क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर का वोल्टमीटर का साइन वेव क्या होगा? 1.11 फॉर्म फैक्टर। रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन मेजरमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू ऑब्टेन कांस्टेंट रिजल्ट अंडर डिफरेंट कंडीशन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? फॉर अ शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन द वोल्टेज रेगुलेशन इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीरीज रेजिस्टेंस एंड द लोड पावर फैक्टर. हाउ डज एन इंक्रीज इन अ टेम्परेचर इफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज कॉइल? इंक्रीज रेजिस्टेंस. डिले टाइम इन IGBT is a time for collector ammeter voltage VCE to fall from VCE to 0.9 VCE. VCE का मतलब क्या है? voltage collector ammeter. In a step down auto transformer with runs ratio of 10/5 the inductively transferred power is, आंसर क्या होगा? हाफ ऑफ द total power. आंसर क्या होगा? हाफ ऑफ द टोटल पावर. द क्रिटिकल clearing time depends on which of the following factor in a power system? The type of fault and the location of fault. For a transmission line with an insulator string, if the string efficiency is low, which of the following can be a potential consequence? Increased voltage across the first insulator unit, potentially leading to insulation breakdown. In a potential transformer PT, where is primary winding connected? तो कहाँ कनेक्टेड रहता है? हाई वोल्टेज साइड में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पावर डायोड? पावर डायोड का एक टाइप है फास्ट रिकवरी डायोड को हम लोग पावर डायोड भी कहते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय. तो इसका आप आंसर ऑनलाइन चेक कर लीजिए एक बार. स्टेप अप चॉपर हैज़ इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट and output voltage is 660 volt. If non-conductive time of thyristor 100 microsecond, calculate the pulse width of output voltage 200 microsecond. At what load angle is maximum power developed in a synchronous motor? The answer is the 90 degree. In a DC machine, the across magnetizing effect of an armature reaction is caused by armature MMF acting perpendicular to main field. In a series RLC circuit is in resonance when XL equal to XC. The inductive resistance XL of an inductor depends on frequency and inductance. The de-storation factor of two pulse converter is
measure of harmonic content in the output current. 22 गॉस लॉ डिफरेंशियल फ्रॉम इज गिवन बाय, इसका सिंबल क्या होगा वो आप लोग एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा. ड्यूरिंग एन असिमेट्रिकल फॉल्ट such as a line to line fault, the transmission line typically experience a current unbalance between the faulted phase and the unaffected phase. क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा और वो अनबैलेंस हो जाएगा. Which of the following circuit elements can store energy and return to the circuit? आंसर क्या होगा, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. Which of the following statement about load sharing parallel transformer is? Transformer with the same Z% share load biased on their KVA rating. 26. Circuit has a lagging power factor. To improve the power factor, which of the following device should be connected and how does affect the current drawn? Power factor improvement के लिए क्या यूज होता है? कैपेसिटर इन पैरेलल. क्या कनेक्ट होता है? कैपेसिटर इन पैरेलल. रिड्यूस करंट एंड इम्प्रूव power factor. In the case of single line to ground fault, the fault current is primarily determined by the total system impedance including line and ground impedance. Why do squirrel cage induction motor not require slip ring? Rotor bars are short circuited internally क्या रहता है, रोटर बार शॉर्ट सर्किटेड रहता है, जिसके कारण क्या होता है, स्लिप रिंग में स्लिपिंग नहीं रिकॉर्ड होता है किस स्क्वायरल केज मोटर में. इन अ बैलेंस स्टार कनेक्टेड 3-phase सिस्टम द लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फेज वोल्टेज? फेज वोल्टेज क्या होगा, 230 वोल्ट. हाउ डज इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजिट इन DVM इफेक्ट्स एट्स रेजोल्यूशन? इट्स इंक्रीज द रेजोल्यूशन. Why do electrostatic instrument not required to separate controlling torque mechanism? Because the electrostatic torque naturally balance the movement. क्या करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क, नेचुरली बैलेंस करता है मूवमेंट को, इसके वजह से एक्स्ट्रा कोई टॉर्क का सेपरेट टॉर्क का दरकार नहीं पड़ता है. द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय. आंसर आप लोग ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिएगा. 33 भी सेम है. द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच डिस्टेंस आर फ्रॉम ए इन्फिनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज गिवन बाय. तो आंसर ऑनलाइन एक बार चेक कर लो. ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन स्कीम. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज्ड in the protection circuit? To provide an accurate representation of the system voltage at a reduced level. Which of the following load flow method which uses the bus impedance matrix to solve the system load flow equation? Z bus or Gauss elimination method. Which of the following is a type of controlling system in an analog instrument? Spring control. In a cross field theory, the term quadrature field refer to field that perpendicular to the sector's main field. 4. Obtaining load commutation in a voltage source inverter, capacity reactance of a load must be greater than its inductive resistance. 41. For a three-phase fault in a balanced system, power system, three-phase fault in a balanced power system, the fault current is primarily determined by the positive sequence impedance of the system. The positive sequence impedance of the system. In a single-phase half-wave circuit with RL load and the free-wheel diode conducts only when SCR reverse bias. The per unit system is used in power system analysis primarily to simplify the comparison of electrical quantities across different voltage level. 45. In a single phase capacitor commutated current source inverter with R load, the number of thyristors used are 4. In the following circuit, resistors R1 equal to 2 ohm, R2 equal to 4 ohm and R3 equal to 6 ohm are connected in series. That means add all the resistance. The total current flowing through the circuit is 24 volt DC. Then what will the ampere taken? तो क्या होगा 2 ampere. If the population standard deviation is 12 and the sample size is 36, what is the standard error? 2. The magnetic flux density D at a distance R from the point charge Q is given by. आंसर आप लोग ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिएगा.
At the boundary between a conductor and free space, the tangential component of the electric field is 0. If the applied voltage in an electrodynamic type voltmeter is double, what happens to the deflection? It becomes 4 times. क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वोल्टमीटर का डबल होगा तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा. In the Newton-Raphson method of for load flow analysis, the size of the Jacobian matrix for the system with n bus is 2n minus 2 into 2n minus 2 matrix. In the type A chopper, limit of continuous conduction is reached when given Imn in initial value of current Imx is final value of current. Imn goes to 0. In a double case rotor, the outer case has higher resistance and smaller cross-sectional area. Type E chopper operates in all 4 coordinates. Which of the following is a not characteristic of a transformer? Change the frequency of electrical supply. फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, तो वो गलत है. इन अ RC circuit, the time constant R is given by R into C. Which of the following semiconductor device does not belong to the thyristor family? IGBT, insulated gate bipolar transistor क्या करता है, thyristor family से belong नहीं करता है. The electric field at the center of uniformly charged circle ring is 0. The potential V due to uniform line charge density lambda at a distance r taking reference. Answer will be checked online. Which statement about the equivalent circuit of a single phase induction motor neglecting core loss are true? So statement 2 and 3 are true and 1 and 4 is false. So we are only taking 2 and 3. Rotor resistance is split into forward and backward component, each equal to R capital minus R by 2. Third is core loss resistance RC is omitted from the circuit. A statically induced EMF occurs when stationary loop is placed in a changing magnetic field. Increasing rotor resistance in a wound rotor induction motor affects starting torque by increasing it. The real power P in a AC circuit is given by P equal to VI cos phi. In an AC circuit, the power factor 0.6 lagging. If the active power consumed is 600 watt, the apparent power. So we are know that active plus reactive equal to apparent. That means 1000 VA. 64. In an AC circuit, the power factor 0.6 lagging if the active power consumes 600 watt. What is the apparent power? The answer will be same, 1000 VA. 65. In the Newton-Raphson method for load flow analysis, the update of voltage magnitude and angle is performed using the inverse of the Jacobian matrix multiplied by the power mismatch. 66. What will be the output voltage frequency in a single phase full wave bridge converter? Twice the input supply frequency. The balancing equation of the on bridge contains which components? Inductance, resistance and capacitance. Coulomb's law states that the force between 2 point charge is inversely proportional to the square of the distance them. 69. In a single phase full wave midpoint converter, commutation is usually employed. Line commutation is usually employed. किसमें? सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर में लाइन कम्यूटेशन इज यूजुअली एम्प्लॉयड. ओके, लास्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट अबाउट स्टार स्टार कनेक्शन आर इनकरेक्ट? तो क्या क्या है, थर्ड और फोर्थ वो गलत है. तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड है, तो फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं. रिक्वायर्स टू टर्शरी डेल्टा वाइंडिंग फॉर थर्ड हार्मोनिक सेपरेशन. दैट्स अ ट्रू. नेचुरल इज अवेलेबल ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड. नेचुरल क्या दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में अवेलेबल है क्योंकि वाई वाई है. स्टार कनेक्शन में नेचुरल दोनों साइड रहता है. गलत क्या है, आइडियल फॉर हेवी अनबैलेंस लोड. गलत है. लाइन वोल्टेज इक्वल फेज वोल्टेज कभी होगा नहीं सेम, तो ये भी गलत है. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो.
तो हम लोग आज 70 क्वेश्चन का सॉल्व किया प्रीवियस ईयर का HPCL 2025 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।